हेलो गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड रवि और आज आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों मैं एक नया वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलपीजी सीक्वेंशियल किट के बारे में। आज हमारे पास है 2020 मॉडल इक्को, मारुति इक्को गाड़ी है जो 5 सीटर है और इसके अंदर आज हम मारुति जो सीक्वेंशियल किट होता है एलपीजी का वो फिटमेंट करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और अभी तक आपने हमारा ये चैनल रवि मनारिया अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा ये चैनल रवि मनारिया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस गाड़ी में कैसे फिटमेंट होगा, यहाँ इस गाड़ी में वेपोराइजर कहाँ लगेगा, सीक्वेंशियल वाला रिले कहाँ लगेगी और ECU कहाँ लगेगा, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और वायरिंग कैसे होगी उसके बारे में भी मैं बताऊंगा और इसका माइलेज क्या रहेगा एलपीजी के ऊपर पेट्रोल के अकॉर्डिंग वो भी मैं आपको बताऊंगा। टॉप स्पीड, माइलेज सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस गाड़ी में जो इंजन होता है वो सीट के नीचे होता है दोस्तों। अल्टो है या फिर स्विफ्ट वगैरह जो दूसरी गाड़ियाँ उनमें इंजन आगे की साइड में रहता है और इसमें बीच में रहता है। तो कैसे फिटमेंट होगा वो मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूँ। तो गाइज आज हम मारुति इक्को के अंदर जो सीक्वेंशियल किट लगाएंगे वो यूनिटेज का लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट किट का जो बॉक्स है यूनिटेज का, और देखिए इसमें क्या क्या आएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारा सीक्वेंशियल वेपोराइज़र होता है वो इस तरीके से आएगा। ये हमारा सीक्वेंशियल वेपोराइज़र है गाइस, देखिए काफ़ी अच्छा यूनिक है और काफ़ी हैवी भी है, मजबूत है। और उसके बाद ये हमारी वायरिंग आएगी, ये ECU आएगा यूनिटेज का, ये हमारा मीटर का जो सेंसर है वायरिंग, उसकी सेंसर वायरिंग सारी इसमें आएगी। और ये हमारी रील आएगी, ये हमारी रील है, ये लगाएंगे हम। और बाकी का जो सारा सिस्टम है, जो हमारी पाइपिंग है काफ़ी मजबूत पाइपिंग है, ये सारा हम फिटमेंट करेंगे गाइस। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो गाइस इस गाड़ी की हमने ड्राइवर सीट, कंडक्टर सीट और पीछे की जो सीट है वो खोल ली है। और ये जो हमारी मैनिफोल्ड है, देखिए अब ये 4 सिलेंडर गाड़ी है इको, 1 2 3 4 चारों मैनिफोल्ड पर हमने। तो गाइस ये हमारी चारों मैनिफोल्ड है, इसके ऊपर हमने ब्रास की जो हमारी जो 8 नंबर की नोजल होती है 1 2 3 4 चारों कस दी है और एरोलाइट लगा दी है। और ये हमारी वैक्यूम के लिए हमने यहाँ से कनेक्शन ले लिया है। अब मैं इसके अंदर रील लगाऊंगा, ये जो रील है हमारी, ये रील फिट करेंगे, फिर मैप सेंसर लगाएंगे और फिर हमारा ECU की वायरिंग कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए गाइस। हमारी रील पे जो नोजल लगेगी वो है, तो इसके मैं छेद थोड़े से बड़े कर रहा हूँ क्योंकि पिकअप नहीं आएगा और मैप ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी इसलिए। મલ્ટીભાઈ अलग की ये जो चैनल है नहीं चैनल आई हूँ तो भाई यहाँ पे हमने वेपोराइजर फिटिंग किया है नीचे और यहाँ पे जो हमारी रील है वो फिटिंग की है। गाड़ी के नीचे हूँ मैं अभी, 2 पत्ती लगा के इसको फिक्स कर दिया है, वाइब्रेशन से ढीला नहीं होगा। तो गाइस ये हमारी कूलेंट की पाइप है, तो हमने इसमें कंप्लीट कनेक्शन कर दिया है इसका नोजल लगा के।
लोड़ा रोटे तो गाइज ये हमारा मैप सेंसर है और इसमें हम फिटिंग कर रहे हैं। की पाइप है जो मैप सेंसर में जा रही है। ये वैक्यूम की पाइप है। The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange. Popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 तो गाइस इसके अंदर हम टैंक पुराना लगा रहे हैं क्योंकि ये पार्टी के दूसरी गाड़ी का था, तो इस गाड़ी में लगा रहे हैं। इस पे हम 90 डिग्री का मल्टीवाल लगा देंगे। में गैस तो नहीं मिल रहा। तो गाइस ये हमारा 90 डिग्री का मल्टीवाल है, इसको मैं लगाऊंगा तो ये ऐसे काम करेगा। पुराने टैंक का जो वाल था वो हमने निकाल लिया है। ये स्टूडियो है। पेस्ट कर ला।
The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. जा ले ला बढ़िया I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, don't regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. चलो तो गाइस ये हम फ्लेयरिंग बना रहे हैं, फेरुल लगा के वेपोराइजर के अंदर कनेक्शन देंगे। कटर दीजिए, कटर, वायर कटर। हमारी सूट नहीं कर लगता है। तो गाइज ये हमारा ECU है, इसके अंदर हमारी जो वायरिंग का जो सॉकेट है वो हम लगाएंगे। देखिए इसको सारा कंप्लीट लगाने के लिए ये लॉक हो गया है और इसको हम यहाँ लगा देंगे। फायरिंग टेप दो। I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, don't regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic.
नहीं देखिए चक्सा टाई दीजिए लगे थे टाइम बड़े पैदल रेनाड़ी ने Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name, I just wanna be famous, I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get, I don't really take a loss, well I'll admit, that's why I'll make it to the top, yeah I commit, and no I'm never getting lost, I get after it, investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go, let me spend, everything that you see is something I invent, and it's only a percent, I'm gonna take shots, if I miss all, forget it, I'll take a fat loss, just to learn all that's in it, I'm taking snapshots, learning how to fall and get it, I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it, I never back up, I don't miss a thing, don't regret it, I'm always learning, you could call me academic, I'm always working, never been apathetic, that energy is like a poison, needs a antiseptic. भलाई में देना ना तो गाइस फाइनली हमारी ये जो गाड़ी इको है वो हमने कंप्लीट कर दी है। BS6 है और कंप्लीट प्रॉपर तरीके से हमारी गाड़ी रनिंग कर रही है। तो गाइस फाइनली हमारी जो इको गाड़ी है BS6 वो हमने कंप्लीट सीक्वेंशियल LPG पे फिटिंग कर दी है और प्रॉपर तरीके से गाड़ी वर्क कर रही है और जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। जो माइलेज रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है इसका। आप इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारा ये चैनल रवि मैनेरिया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।